I want a function which will iterate over an array. So let's say it will iterate over an array and perform sum between all the some uh, let's say it will just do multiply by 2 on the all the elements, right? So I add a function copy array and multiply by 2. Okay, so this is one of the functions. So it is taking input of an array, and the how will you write this code? It is very simple. You'll write let result equal to your empty array, because it says copy array, right? So we want to create a copy of the array that we are receiving. So, and then we are going to loop over this. Let I equal to 0, I less than array dot length, and I plus equal to 1. Okay. Yeah. So what we are going to do now is result of I equal to, what do we do? Array of I into 2. Okay. So this is what I'm going to do, and I'll just return the result. So it's a very simple function, right? Now, later in my code, I get, so can anyone just, I'll pause here. Just can anyone tell me what is the main use case of a function? Why would you write a function? Reusability. Yes. So for the entire idea of our function is to be to provide reusability, right? So let's say I first created a function called copy array and multiply by 2. Then I created a function copy array. Now I have a requirement of divide by 2. So it's getting repetitive, right? So we know that everything is common except this particular operator, correct? So there is a one programming principle which this code is breaking. Can anyone explain what it is? Okay, so there is very important programming principle is DRY. Okay, DRY. What does it stand for? Do not repeat yourself. So what we are doing over here is we are repeating ourselves a lot, correct? Then how do you think you can fix this problem? Like I want later, let's say I have another function. Uh, then instead of divide by 2, it will be add by 2. That time I'll have to put plus. So you'll see that only thing that is changing in my entire code is this particular operator. How do you think you can fix this? Okay, so the easiest way would be if I would be able to pass this operator as a parameter somehow over here, it would be amazing, right? Like if I, whenever I want to, I'll just change my definition to copy array and manipulate. Okay. So if somehow if I was able to pass my operator, it would be amazing. But will this work in JS? No. Then what? Okay. बी ओपन, आराम से बोलो, जो भी है गलत भी है तो भी चलेगा, बट बताओ, लाइक बात तो करो कम से कम, लाइक अगर मैं ऑपरेटर यहाँ से पास तो नहीं कर सकता, राइट? क्योंकि दिस इज अ सिंबल, एंड सिंबल्स कांट बी, मतलब दिस इज अ ऑपरेशन दैट आई वांट टू परफॉर्म, एंड बाय पासिंग ऑपरेटर लाइक मैं मैक्स ऐसे भेज पाऊंगा, बट विल दिस वर्क? नो. बट तो फिर कैसे काम करेगा ये? ओके, सो what I'm going to do is I'll create some small functions, right? So what I'll do is I'll create a very small function here, which will say multiply by 2. Okay, very simple. It will take two parameters, a comma b. Actually only one parameter, because we just want to multiply by 2, and this is ultimately going to return a into 2, correct? And what I'm going to do now is, instead of this, I'll just write multiply by 2 and pass in my array of I. Okay,
So does this solve my problem, or does anyone have a better way of doing this? Are we still breaking the dry principle of programming? Anyone? Rishabh? We Aniket? use like we can Hmm. pass I mean कोई एक आर्गुमेंट पास कर दीजिए आई मीन एज ए स्ट्रिंग पास करे और उसके बाद स्विच या फिर इफ एल्स कंडीशन यूज करके हाँ, अकॉर्डिंगली करे तो बट तुम वो कब तक करोगे? दैट विल बी द थिंग, राइट? सो अभी अभी मेरे पास चार ऑपरेटर हैं। मान लो कि मेरे पास स्टार है, मेरे पास डिवाइड है, मेरे पास प्लस है और माइनस है। उसके लिए तुम केस एक ऑपरेटर एज ए स्ट्रिंग पास करके केस केस स्विच केस लगा के तुम कर सकते हो। बट इज दैट वेरी फ्रूटफुल सॉल्यूशन? क्योंकि अभी मेरे को बाद में आएगा कि मेक इट अ स्क्वायर, मेक इट अ क्यूब। तब तुम कैसे करोगे? एबल टू अंडरस्टैंड, राइट? अभी मैं खाली ये बोल रहा हूँ कि मल्टीप्लाई बाय टू, डिवाइड बाय टू, ऐड बाय टू, सब्सट्रैक्ट बाय टू। बट लेटर इन माय कोड मेरा, मैंने अपनी लाइब्रेरी एनपीएम पे पब्लिश कर दी। नाउ समवन रेज्ड एन इशू कि भाई मैं खाली चार चीजें कर पा रहा हूँ। व्हाट अबाउट अदर ऑपरेशंस? आई वांट टू परफॉर्म अ स्क्वायर रूट, आई वांट टू परफॉर्म अ स्क्वायर, आई वांट टू परफॉर्म अ क्यूब। हाउ विल आई डू इट? तब तुम हर बार स्विच केस इज नॉट रियली अ गुड सॉल्यूशन, राइट? तुम हर एक ऑपरेटर को स्विच केस देना शुरू करोगे तो। सो दिस अप्रोच दैट आई एम सजेस्टिंग इज वन ऑफ द good approaches, and it is already being followed. I'll break the bubble for you in just 2 minutes. So how we will call this function right now is we will pass our array 1, 2, 3, and we will pass another operation which is going to be, let's say I want to perform multiply by 2, so I'll just pass my function. At the start of this session I said that functions can be passed as an argument. Mostly most of you might be already knowing it, but why we can pass it as an argument? Because behind the scenes is just an object, and we can pass object as a argument, hence we can pass function as an argument as well. Okay, so multiply by 2 is passed over here, and here I'll just say callback. Okay, and this will become a callback. Is this does this seem familiar to you? What this function is? It is nothing but array dot map. Correct? Any doubts here? So array dot map does the same thing, right? So instead of passing first argument as an array, I would pass 1, comma 2, comma 3, and map में I'll just pass my multiply by 2. This is my callback, right? This is a known thing, like it is already there in JavaScript. Okay, so any doubts here? You all are agreeing with me or not? At least say yes or no. Yes, Vishal. Yes, yes correct, yes right? So ये वही चीज है जो मैंने यहाँ लिखा है. It is exactly the same thing what map would do. But अब तुम्हें इंटरव्यू में ये पूछा जाता है कि राइट अ पॉलीफिल फॉर अरे डॉट मैप. ठीक है. सो पॉलीफिल का मतलब क्या होता है? नो, सो पॉलीफिल का मतलब ये होता है कि मान लो कि तुम्हारे पास अरे डॉट मैप फंक्शन नहीं है. ओके, मान या तो ऐसा सिनेरियो मान लो कि क्रोम में है, फायरफॉक्स में है, ऑपरा में नहीं है, इंटरनेट एक्सप्लोरर में नहीं है. तो वी वांट आवर वेबसाइट टू वर्क एवरीवेयर. सो दैट्स व्हेन वी विल बी राइटिंग पॉलीफिल्स कि भाई इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन अरे डॉट मैप, मैं अपना खुद का इम्प्लीमेंटेशन लिखूंगा जो हर एक ब्राउजर पे काम करेगा. सो इंटरव्यू में तुमसे यही पूछा जाएगा, बोलेंगे कि राइट अ पॉलीफिल फॉर अरे डॉट मैप. तब तुम्हें ऐसा कुछ इस टाइप का कोड लिखना पड़ेगा. ओके, सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट. तुम्हारे फ्रंट एंड इंटरव्यूज में हमेशा दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल कम अप कि राइट अ पॉलीफिल फॉर अरे डॉट मैप, राइट अ पॉलीफिल फॉर डॉट बाइंड, राइट अ पॉलीफिल फॉर प्रॉमिस, राइट अ पॉलीफिल फॉर दिस दैट. दिस इज गोइंग टू बी वेरी कॉमन प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन जो मशीन सॉल्विंग राउंड होता है उसमें. ये क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं. ठीक है, सो दैट्स व्हाई आई वांट टू एक्सप्लेन यू द कॉन्सेप्ट
कि तुम जब कॉन्सेप्ट्स पे क्लियर रहोगे तो इस तरह का कोड लिखना बहुत आसान रहेगा. Right now, according to our concepts, you understood, right, how we solved the problem. The concept was that we should not repeat ourselves. The concept was we know that function is a underlying object which can behave as an object. Hence, we can pass it as a argument. So those are the concepts, and this is the problem solved that we have done. So these kind of questions will be asked. Okay.